ठीक है गाइज, केमिस्ट्री का सिलेबस देखो, वी कैन डिवाइड इनटू 3 पोर्शंस, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। फिजिकल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल आपको करना होता है, कॉन्सेप्ट्स एंड ग्राफ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जैसे एग्जांपल्स हैं। उन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स क्या है, नॉन आइडियल, एक्सेलेंट, हाँ यही सारे एग्जांपल्स हैं। इनऑर्गेनिक में हम ज़्यादातर और ऑक्सीडेशन स्टेट करने वाले हैं, फिर कलर ऑफ द आयंस करने वाले हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन हम वीबीटी, सीबीटी, आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऑर्गेनिक में जैसे मैंने बताया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन, फिर SN1 SN2 रिलेटेड, फिर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स, एंड देन जैसे व्हाट हैपेंस व्हेन और ABCD देना, फिर उसके बाद कन्वर्जन रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। तो हम इन सारे टॉपिक्स पे विल पे अटेंशन, ठीक है। तो विल स्टार्ट विथ फिजिकल केमिस्ट्री एंड देन वी स्टार्ट विथ सॉल्यूशंस, ठीक है। ठीक है, फिर सॉल्यूशन कैसे बनता है, एक सॉल्वेंट होता है एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट प्लस सॉलिड गिव्स यू सॉल्यूशन। फर्क क्या है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट में? एग्जैक्टली, सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा होता है एंड सॉल्यूट का कम होता है। तो हम सॉल्यूशन कैसा डिस्कस करेंगे, सिर्फ होमोजीनस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनस हम डिस्कस नहीं करने वाले। सर डिफरेंस भी आता है ना होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में? हाँ जी, और होमोजीनियस में भी वी विल बी डिस्कसिंग जस्ट बाइनरी सॉल्यूशंस। ऑलराइट, नाउ इसके कुछ टर्म्स है, कुछ पैरामीटर्स है, लाइक मोलैरिटी। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ solution, per liter of solution, that is important. What is formula for molarity? W V into MB. So what is WB? Weight of solute in grams. V क्या है? Volume in milliliter. What second? क्या बोल रहा हूँ? सेकंड कंपोनेंट। हाँ हाँ, VB solute और second component. बट सेकेंड कॉम्पोनेंट इज मिसलीडिंग, यू डोंट नो सेकेंड कॉम्पोनेंट ज्यादा में है अमाउंट में कि कम अमाउंट में, तो इट इज बेटर टू से सोल्यूट second component. If you choose to say solute as first component, then solvent becomes second component, second is not that clear, ठीक है। so this is volume in ml, milliliter. तो आप MB is molecular mass of solute. अब इसमें एक मोलालिटी है, मोलालिटी इज नंबर ऑफ solute per kg of solvent, ये इंपॉर्टेंट, पर kg of solvent। तो ये स्मॉल m से डिनोट होता है WB इंटू 1000, WA इंटू MB। तो ऑल द टर्म्स हैव गॉट देयर यूजुअल मीनिंग, यहाँ जैसे है, बट WA क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। Could you tell me molarity का formula in terms of density? इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, सर W सॉल्वेंट होगा ना? हाँ सॉल्वेंट। So Kumran wants to know this molarity in terms of density. Density of what? Solute. Solute density. You see, this is mass, weight or mass of the solute. This is volume. So mass per unit volume becomes density. So the molarity will be rho into 1000 by MB. So rho will be your density. What is rho? WB into M, and its unit will be gram per सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर ml, ओके। बिकॉज सॉल्यूट को हम किस में ले रहे हैं? ग्राम में, और V को किस में ले रहे हैं? मिलीलीटर्स में। तो डेंसिटी के टर्म्स में ये फॉर्मूला है। तो ये तो नॉर्मल चीज है, बट द इंपॉर्टेंट जो पोर्शन जो एग्जाम में पूछा जाएगा है कि विच पैरामीटर इज बेटर, मोलैरिटी और मोलैलिटी?
Like which one should be used? Molarity, which should be preferred? Liti. Molality, Kumran. Why? So because it like depends upon mass and volume, because volume can change or increase, but mass. But mass won't change. So you see, clearly molality depends on mass and not on volume. Molarity depends on volume. Volume may change with temperature. So temperature. So molarity becomes temperature dependent, where molality is independent of temperature. So molality is better parameter as compared to molarity. Nice. So let me write down question. Which parameter is better? Next parameter जो हमें ध्यान से देखना चाहिए is mole fraction. So mole fraction क्या होता है? Number of moles of a component to the total number of moles. Now you see, suppose binary solution देखते हैं तो chi1 will be number of moles of 1 by n1 plus n2 and chi2 will be n2 by n1 plus n2. If you add them both, chi1 plus chi2, it will be so you get 1. So if you know the one of the mole fraction, you can find another mole fraction just by subtracting it from the other. So it is one of the useful quantity. If you have n components, क्या होगा? Sum of mole fractions will be should be 1. All right. ठीक है. So these parameters are important: molarity, molality, and mole fraction. Now we go to solubility. Since we are dealing with solution में what will happen? A solute will get dissolved to give me a moment, solvent. Now we move to solubility. Because we are dealing with solution, we need to dissolve a solute in solvent. So we need to Specific amount. हाँ specific amount of solute in a solvent. तो we need to see कि कौन सा solute किसकी कितनी solubility है. ठीक है. Now to check this, there are different laws solubility के. First is gas in liquid. So if you dissolve gas in liquid, this is governed by Henry's law. What Henry's law says? Partial fraction of the dissolved gases is directly proportional to its mole fraction. So this partial pressure is equal to Henry's constant and mole fraction. What you see, the partial pressure is directly proportional to the mole fraction and Henry's constant. So if you plot a graph of partial pressure with mole fraction, कैसा होना चाहिए ग्राफ? Constant. सर आपने भी तो लिखा है ऐसे जाएगा ना. It is directly proportional, तो it should go up. हाँ तो अब तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा ना. No, इसको constant ग्राफ नहीं कहते, इसको कांस्टेंट. slope will give you Henry's constant. इसके slope से क्या मिलेगा आपको? Slope is equal to Henry's constant. But graph itself is showing that the
पार्शियल प्रेशर इज इंक्रीजिंग विथ मोल फ्रैक्शन, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, स्लोप विल बी कांस्टेंट, बट जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस। तो ये तो बहुत ही क्लियर है। अब यू नो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग पार्शियल प्रेशर होगा, अलग अलग सॉल्युबिलिटी होंगी। सपोज दिस इज गैस ए एंड दिस इज गैस बी, किसका हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा है? बी वाले का। क्यों? करेक्ट आंसर, व्हाई? स्लोप ज्यादा है, ग्रेटर स्लोप मींस ग्रेटर हेनरीज कांस्टेंट। नाउ बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत चांसेस है। दिस इज वीवीआई। Now the question is, what would happen to the solubility of a gas over a liquid if the Henry's constant is increased? आपने क्या करा? हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज कर दिया, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ओके, सो एज पर मिश्रा जी it should be increased. So options are increased, decreased, or decreases, increases, decreases. C remains constant, and D first increases then decreases. So you know partial pressure is constant, product of Henry's constant and mole fraction is constant. So if you increase Henry's constant, solubility will fall. मोल फ्रैक्शन आपने नहीं बताया। But I was generally face the problem of bend. Phenomenon of bend. So what happens here? When scuba diver is deep down the ocean, what happens? There is high pressure, not just atmospheric pressure, but the pressure of the water column above his body. So because of high pressure, solubility increases. Now if solubility increases, nitrogen also gets dissolved in blood. Now you know nitrogen has no use in our body, right? Only oxygen gets absorbed. So nitrogen keeps on accumulating in blood and they clump together, and then you know if the clumping is large, they obstruct signal to flow through our body, and that results in the phenomenon of bend. You know, so to avoid this process, avoid this thing, what the cylinder, the oxygen cylinder of scuba divers are changed. So what is composition of oxygen cylinder? Oxygen cylinder composition is helium 11.7%, nitrogen 56.2%, and oxygen 32.1%. So this is a composition. This is extremely important. What is composition of oxygen cylinder of a scuba diver? So you see, percentage of oxygen is increased and percentage of nitrogen is decreased. And you know the helium is a noble gas, so you can increase its percentage, it won't get attached to your blood. Okay, so what should be the oxygen cylinder ka composition if one is going on mountains? कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना चाहिए कि आप जो माउंटेन्स पे जाते हैं उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, रिटेंशन पावर बढ़ाना चाहिए। जरूरत नहीं है, यू कैन ट्रेन योर लंग्स। तो एनोक्सिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन कम सप्लाई होती है, लाइक सोल्युबिलिटी कम हो जाती है ब्लड में, तो इससे क्या होता है चक्कर वक्कर आने लग जाते हैं और डिसीजन मेकिंग क्या होता है स्लो हो जाता है। यस